Hello guys, this is me Hajra Vadhariya. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So this is the part 2 about the cyclone update and all of that. और साथ साथ में दूसरी भी मैं just random vlog बना रही हूँ और आपको साथ में cyclone की update भी दे रही हूँ. So in the last vlog मैंने I did mention that I'll be continuing it because फिर वो बहुत super long and boring हो जाता है. So I thought I would start the vlog. और आज 15th है जिस दिन जो है साइक्लोन ने हिट करना है. सो रात में मुझे थोड़ा डर लग रहा था सोने से पहले और थोड़ी इट वाज लाइक एंजाइटी समथिंग. तो इस वजह से मुझे नींद नहीं आई थी. आई स्लेप्ट क्वाइट लेट. और सुबह जब मैं उठी उस टाइम तक जो फर्स्ट बारिश की शिफ्ट थी वो हो चुकी थी. अराउंड 11:30 के टाइम पे बारिश हुई थी और बहुत दैट व्हाट द अपडेट आई गॉट वाज बहुत तेज़ हवाएं थी और बारिश थी. सी वाज आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट या दैट्स अपेरेंटली हाउ द साइक्लोन हिट इट. और उसके बाद का क्या सिनेरियो है बिकॉज समंदर में वो अभी भी है बट ऑब्वियसली वो थोड़ा टर्न हो गया और कराची से थोड़ा दूर हो गया. तो कराची की कोस्ट की क्या सिचुएशन है वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी इस व्लॉग में. और लेट्स सी मज़ीद बारिश होती है नहीं. सो काफ़ी सारी जगहों पे बारिश हो रही है कराची में बट यहाँ पर बस सुबह हुई थी. और मैंने ये नोटिस किया है सिंस लास्ट ईयर मानसून ऑल्सो कि जब कराची के दूसरे एरियाज़ में बारिश हो रही होती है जब समंदर के करीब नहीं होती है बारिश इस एरिया में, और जब इस एरिया में हो रही होती है जब वहाँ अंदर नहीं हो रही होती है शहर में. सो दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस. सो लेट्स सी अब यहाँ बारिश होती है नहीं. सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड कि क्या समंदर की सिचुएशन है सुबह से और क्या करते हैं. लेट्स सी. आज अली की छुट्टी भी है सो वील मे बी डूइंग समथिंग हियर एंड देयर. सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स डाइव इन. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर कैसा मौसम है, क्या सीन है. और अभी रोशनी हो रही है सो आई विल शो यू गाइस कि समंदर का क्या सीन है. आई होप अगर करीब जाने दिया बिकॉज सुबह जब बारिश स्टार्ट हुई थी आई वॉज नॉट अप एज आई टोल्ड यू. तो उस टाइम पे ट्रैक के करीब किसी को जाने नहीं दे रहे थे बट अभी आई सॉ अ कपल ऑफ पीपल. तो फिर हम नीचे आ गए. आज अली की भी छुट्टी है थैंक्स टू द वेदर, thanks to the cyclone. So let's see. हमने सोचा कि मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है. So let's go down, let's roam. Maybe I'll go have coffee because हमने जो है कल सारा सामान अपना जो है पैक कर दिया था. तो मैं अपने सिरप्स और बहुत सब चीज़ें अंदर पैक कर चुकी हूँ. तो मुझे बड़ी सुस्ती हो रही है उनको निकाल के पर आने की. सो मे बी I'll have बाहर से कॉफ़ी और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मौसम हो रहा है. You can see the gorgeous sky, cloudy and nice. Sunset भी होने वाला है, अभी थोड़ा टाइम है. So yeah, the wind is quite intense. So काफ़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को मैनेज किया है because the wind is so intense. My clothes and my hijab, everything is just going here and there. Super embarrassing but I thought I would show you guys. मुझे बड़ा दिल चाह रहा था इस टाइम पे आपको दिखाऊंगा. The waves are quite high and gorgeous. कौन इशारा कर रहे हैं? ज़्यादा लोगों को करीब जाने नहीं दे रहे बट look at this. बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है. स्काई इज़ गॉर्जियस, द सी इज़ गॉर्जियस. ऑब्वियसली थोड़ी सी पावर है, टाइड्स आए हैं और ये आगे तक पानी आ चुका है. इतनी ज़बरदस्त वेव्स हैं बट थैंक्स टू
the security people, they're not allowing us to go near. और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन जो हो रही है दैट कैन ऑल्सो बी डेंजरस. सो अभी हम कुछ थोड़ा सेफ साइड पे जा रहे हैं. आई एम गोना मेक फ्यू क्लिप्स फॉर यू गाइस वहाँ से. इतनी खूबसूरत लग रही है ना भाई यहाँ पे. सो ये आप स्काईलाइन चेक कर सकते हैं. The waves are so gorgeous. So guys, इतनी तेज हवा थी that literally we were like going here and there. इतनी तेज हवा थी. But अब हम जा रहे हैं. So I'll have coffee. So let's go. तो आज हम कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं एट मारियाज कैफ़े राइट हियर. सो ट्राई करते हैं कैसा है. Okay guys, so अभी we just got done with coffee और काफ़ी देर लग गई honestly speaking. So this is this new place जिसकी मैं देख रही थी. So I wanted to try their coffee. I love trying new coffees everywhere. And also they had a couple of good items on their menu, like their coffee bun. It's really famous and sort of getting viral. And I also wanted to try their cinnamon roll and maybe banana bread or something like that, just you know, just something along with the coffee. So we went there, or they literally had nothing available. They just had one croissant, a couple of chicken patties and cardamom buns. That's all that they had. And I wanted to try their coffee bun. So I do get it. It gets out of stock really fast because it's really, like, people are really loving it and having it. So I get it. But other than that, also there were no like, so many items from the menu were missing, like mini pizzas and stuff like that. So that put me to a little off situation, not gonna lie, because I don't like when I don't get something that I want. So I was not really happy with that. Then we ended up ordering coffees. So they didn't have all the coffee flavors available either. So that was also a little something that, you know, gets up there in my mind. And then we ordered their caramel frappuccino and their hazelnut frappuccino. The coffees were not that late. The coffees were so good. They were really nice. But I did not like the overall management, the time they took to serve. Then they didn't added any cream on top. It was a frappuccino. I think I've never seen a frappuccino without the topping, the whipped cream topping. So I had to ask them to do it for me, and then they literally took forever for that. They took forever for the coffees. Literally half an hour just for coffee. I was like, what? Maybe it's very new, maybe it's you know, they don't have enough equipment to, you know, tackle all the coffees maybe. So they're taking like one by one, to usme shayad time lag raha. But they overall they were like really slow, and I was like, okay, I need to get back home. So
yeah, that's the review. But overall, the coffees were really good, and whatever savory items were available looked really nice. But it was not something that I like having, so I didn't get any of that. But I absolutely will definitely try the coffee bun and maybe cinnamon roll or something else. But I will definitely order coffee bun or maybe get it sometime in the morning or so. So let's see how that goes. But अभी जो है हम बस आ चुके हैं वापस और ऊपर जाएंगे और let's see क्या situation है समंदर की, क्या सीन है. I'll keep updating you guys about the cyclone also and about this very random vlog. So yeah, I don't have anything to do right now honestly. So let's see how it goes. Hello guys, I don't know if you can see but visibility थोड़ी सी कम है for some reason. और जो पानी है वो पूरा पीछे जा चुका है. I don't know, दिख नहीं रहा इतना ज़्यादा बट ये पूरा पीछे जा चुका है और काफ़ी काम हो गया है. So that's the update with the sea. अभी देख सकते हो ये बीच पूरा empty हो गया, there is no water. और पानी वो वहाँ पीछे है, there right there. Yes, and it's calm, हल्की हल्की सी waves हैं. So guys, finally मेरी सारी चीज़ें वापस से बाहर आ चुकी हैं और सेट हो चुकी हैं because you know साइक्लोन का जो भी सीन था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ख़तरा था वो टल चुका है from Karachi. But really praying for all the people who are affected in India and also the parts of Pakistan. But for now alhamdulillah it turned from Karachi, otherwise हम बिल्कुल कोस्ट पे हैं. So it was very horrific. So अब जो है when it's we are relieved a little bit. अब मैंने सारी अपनी चीज़ें निकाली, मैं सब मैं पैक कर चुकी थी. In this everything I had literally packed everything, even in my studio. I'll show you guys. सब कुछ मैंने पैक कर दिया था. वो सब कुछ मैंने हटा दिया था, ये सब वापस आ चुका है. बाय द वे यहाँ पर रूम में कपड़े सूख रहे हैं बिकॉज बाहर टेरेस में वी कांट, एक तो सनलाइट तो है ही नहीं और अभी भी वेव्स, एक्सक्यूज़ द विंडो, इट्स वेरी डर्टी. बट ईमार वाले अभी साफ़ नहीं कर रहे बिकॉज बारिश और ये सब सीन में मिट्टी में ऑलरेडी वो डर्टी हो रही है. सो अभी भी वेव्स आगे तक हैं. कल रात को बिल्कुल समंदर शांत हो गया था और पीछे चला गया था. बट अभी वापस से शाम से जो है वो थोड़ा करीब आ गया. और ये इसकी टाइमिंग है, जो भी टाइड्स की टाइमिंग होती है, हाई टाइड्स होती हैं, लो टाइड्स होती हैं. बट overall there is activity in water because somewhere there is the cyclone is still there, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. So activity समंदर की थोड़ी सी है different than usual when there is nothing. But now we are very much relieved because you can see we are literally living on the coast. मतलब अगर ये पानी अंदर आता, जिस तरह अल्लाह माफ़ करे हॉक्स पे बहुत ही बुरा हाल हो गया है, वहाँ से पानी जो है अंदर आ गया हट्स में और बहुत इट वुड हैव बीन अ डिज़ास्टर. पानी में जो भी कीड़े हैं, बिकॉज दिस इज़ प्रॉपर लिविंग स्पेस, ठीक है, तो जो भी कीड़े हैं, व्हाटएवर दिस सी इंसेक्ट्स, इवन स्नैक्स और ऐसी सब चीज़ों का आने का ख़तरा था. अगर ये सब अंदर आ जाता और लिटरली हमें उसके बाद मतलब वंस एवरीथिंग वुड हैव बीन गॉन, उसके बाद भी हमें रहना मुश्किल हो जाता. और किस तरह से पता नहीं टैकल करते अगर ये सब चीज़ें आ जाती. सो इट वाज वेरी हॉरिफिक और मतलब सोच के भी हो रहा था. बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ. और ईमार ने भी काफ़ी सिक्योरिटी के सब सीन्स किए थे जैसे मैंने आपको दिखाया था. नीचे भी दे आर नॉट लेटिंग, एज यू कैन सी जो पूरा ट्रैक है इधर कोई भी नहीं है, दे आर नॉट लेटिंग पीपल कम क्लोज एट ऑल. और विंड्स जो है ना वो बहुत ही क्रेज़ी चल रही है. और यहाँ पर ऑब्वियसली पूरा समंदर है तो बहुत क्रेज़ी विंड होती है.
तो उसकी वजह से भी दे आर बीइंग वेरी केयरफुल. लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं जा रहे बिकॉज कंस्ट्रक्शन ईमार में कॉन्स्टेंटली होती रहती है. तो उस तेज़ हवा की वजह से कंस्ट्रक्शन से कोई चीज़ें आके गिर सकती हैं, कोई भी किस्म का एक्सीडेंट हो सकता है. सो उसको भी अवॉइड करने के लिए दे जस्ट ट्राइंग देयर बेस्ट. एंड yeah, that's pretty much it with the cyclone. और अभी बस देखते हैं, let's see what happens. Maybe we are planning to go out because I have to go to my mom's place. आज Friday है, आज मैं अम्मी के घर जा रही हूँ. So let's see कि क्या सीन होता है. Guys, it's early morning with swollen faces. We are going for nashta. Or we are going for nashta. So funny. So guys, मैं रात में आ गई थी अम्मी के घर और अब सुबह का क्या टाइम हो रहा है? 6 ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अंडा पराठा खाने. So guys, that's pretty much it. We're done with breakfast and we're done with this vlog. I hope you guys enjoyed it. If you did, don't forget to like, comment, share and subscribe. And I'll catch you guys with a new video very soon. Till then, take care. Love you all. Bye bye.